1 is equal to 80 rupees. That's the lowest that rupee has hit ever. Today, what we'll discuss is why is rupee falling? What is contributing to this fall of rupee? Then we'll also dive deeper into what's the impact of a falling rupee on imports and exports. What are the measures that RBI is taking to curb this fall? And what are more measures that RBI can take or the government can take to curb this fall? Hi guys, this is Shantanu Jain. I'm the co-founder at ReadOn and I have Garima here. Hi Garima, welcome. Hi, Shantanu. So today, Garima, we'll dive deep into this topic and let's try and explain it in a very easy to understand way to our audience on what is this all about the rupee falling, right? So let me give you a little bit of context, right? आप गेस करो ये कब से चालू हुआ होगा ये सिनेरियो. So the rupee has started falling in the last couple of months, but I think in the longer event of things, I think everything that is going wrong in the world started with COVID. So I think this also started with COVID. Exactly. So this also started with COVID, and let's trace our steps right from COVID till date. What are the steps that have been taken, and क्या वजह से आज रुपी की ये हालत हो गई है एंड वर्ल्ड वाइड मोस्टली ऑल ऑफ द करेंसीज आर फॉलिंग. तो ऐसा क्यों हुआ है? सो लाइक एवरीथिंग दिस ऑल स्टार्टेड विथ द कोविड एंड यूएसए में जब इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था कोविड का, all around the world also, the first thing that happened was businesses were shut down, right? Mobility was shut down and that impact was huge. कोई भी कहीं भी नहीं जा पा रहा था. उसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी jobs थे they were started going off, right? People lost their jobs, people lost their means to livelihood, right? They stopped earning money, so the whole expenditure wala game, right, that's driving all of the economies, that stopped. Now to ensure that the economy was running, right, and there was enough money in the market for even businesses to access and give out, right, and even for employees or workers to have money to spend, what bigger countries, developed countries did was put money in the hands of people. So they printed a lot of currency. In fact, US printed like tons and tons of money, more than ever in history, just to support that kind of an expenditure that it was doing. Plus every government was spending very heavily on healthcare, right? तो उसकी वजह से भी, बिकॉज दिस हेल्थ केयर का एक्सपेंडिचर वॉज राइजिंग, उनको इतना ज्यादा मनी प्रिंट करना पड़ा, राइट? अब मनी प्रिंट करने की वजह से क्या होता है ना, देर आर लेसर नंबर ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी ऑलरेडी. कोई कुछ प्रोडक्शन तो कर नहीं रहा है, कुछ बन नहीं रहा है, फैक्ट्रीज कुछ गुड्स बना नहीं रही है. सो देर इज मोर मनी इन द इकोनॉमी बट लेसर नंबर ऑफ गुड्स. तो इससे इनएडवर्टेंटली इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, राइट? इन्फ्लेशन अब बढ़ता है एंड यूएस में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा फास्ट पेस से बढ़ने लग गया, राइट? सो दे वर पंपिंग मनी, बट इन्फ्लेशन पे उन्होंने कर्ब नहीं किया कुछ भी, राइट? देयर वर सप्लाई चेन बॉटलनेक्स, they stopped buying from China, the whole Ukraine war has happened and everything, right? So all of this has only added to the chaos. Now what happens when you print a lot of money is that somehow it finds its way into the financial markets. It's very easy for us to think in times of these crises and all of that. You'll see all of these crises are followed by these bursts of capital infusion into non-physical assets, right, which we call the financial assets. So you will see this whole crypto boom happened. Yeah. Uske baad equity boom happened. Private equity boom, which was a startup boom, that also happened, right? And ये सारे markets crazily बढ़ने लग गए. लोगों को लगने लगा कि यार यहाँ पैसे डालते हैं, and especially the already rich population, which was also getting a lot of money, they had nowhere to deploy it. They couldn't make more factories because factories तो मिलती नहीं ना, लोग तो आते नहीं वहाँ पे काम करने को. So that is why what happened was all of this money was pushed into cryptos, emerging market startups, emerging market equities. All of these are riskier asset classes, right? So emerging markets are basically Asian countries, India, Russia, China, all of those. Correct. Brazil also is a part of it. Yeah, all of these nations. Not developed countries now. Correct. Developing, fast-growing, developing countries, emerging countries that will become 10 years down the line very, very big economies, right? So, yeah. So all of these countries में पैसा आने लग गया, especially from these developed markets and mostly from US, right? Now इनके तरफ से पैसा आया हमारे मार्केट्स में, तो हमारे शेयर प्राइसेस भी बढ़े, हमारा सारा इकोनॉमी का बूम बढ़ा, right? So all of this was very, interesting and
ऑल ऑफ दिस वाज वेरी हंकी डोरी, सब कुछ खुश खुश था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, राइट? तो बट बिगड़ा कब तब? बिगड़ा तब जब रियलाइज हुआ कि आपने कुछ ऐसा अनसस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है जहां आपका इन्फ्लेशन बहुत फास्ट पेस पे बढ़ रहा है, जहां आपने इतना मनी प्रिंट कर दिया है कि पीपल वर सेइंग दैट इट्स फ्री मनी नाउ, राइट? इट हैज जीरो वैल्यू एनीमोर, इट हैज नो वैल्यू एनीमोर, राइट? 0% इंटरेस्ट मिलेगा आपको, मनी प्रिंट हुए जा रहा है, तो ऑब्वियसली इट विल चेज समवेयर वेयर इट कैन गेट सम इंटरेस्ट, राइट? As soon as US realized that they had gone completely bonkers and that they had to curb this liquidity flow, they started increasing interest rates. Companies that were investing in our economy, right, in emerging markets in India, in startups or in the public markets also, they started pulling that money out. So डॉलर आया था, अब डॉलर बाहर जाने लग गया. Okay, but they started pulling money, but where were they putting it now? Yes. So what happens is when US had also increased its interest rates, right, to curb this inflation. Why do they increase the interest rates? Usually we assume the US Treasury bills to be zero risk instruments, right? That US They're government government bonds basically. government bonds, correct? That US government will always pay whatever it has taken as loan, right? That is a base assumption that is made. So Okay. US bonds पे उन्होंने बोला कि यार हम 0% से 1.5 1.75% इंटरेस्ट कर रहे हैं, right? Now the whole money management game is a game of balancing these two words, risk and reward, right? Okay. So now what happens is when you increase the reward on an instrument that has zero risk, some money will flow into this हाँ. instrument, right? So that is why, and यहाँ पे risk बहुत high है, reward same ही है, correct? Emerging markets में, right? Emerging markets, correct? Emerging markets में rewards are the same, risk is higher, तो Risk is इसलिए higher. correct. So that is why money gets out of these markets and goes again back to the US Treasury bonds, ठीक है? US जितना government, फेड इंक्रीज करेगा, फेड या फिर यूएस का सेंट्रल बैंक फेड जितना correct? भी इंक्रीज करेगा रेट, उतना ज्यादा पैसा उसमें जाता रहेगा, राइट? Exactly, correct. So इसकी वजह से क्या हुआ, मनी गॉट आउट ऑफ द इमर्जिंग मार्केट्स, मनी गॉट आउट ऑफ इंडिया एंड ऑल ऑफ दैट. सो जो भी डॉलर इनफ्लो आया, राइट, डॉलर इनफ्लो की वजह से क्या हुआ, सप्लाई ऑफ डॉलर इंक्रीज्ड. बेसिक इकोनॉमिक्स, व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस प्राइस फॉल्स, राइट? सो व्हिच मींस रूपी अप्रिशिएटेड अगेंस्ट डॉलर. क्लियर है? हाँ. अभी बोलो क्या होगा जब डॉलर बाहर जाएगा? तो डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ेगी तो Correct. प्राइस की डॉलर की बढ़ेगी, तो प्राइस डॉलर Correct. की बढ़ेगी तो रुपए की गिर जाएगी, which is what is happening right now. Exactly. So demand for dollar increased, because of which rupee fell. Got But it. इतना क्रेजीली क्यों? ऐसा बहुत बार हुआ है हिस्ट्री में वेयर मनी हैज बीन पुट इन, राइट, बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs जिसको बोलते हैं, मनी हैज बीन पुल्ड आउट. बट इतना क्रेजी क्यों? Because all of these are predictable moves, right? RBI can predict these moves and can manage for it or can plan for it in advance. बट ये अचानक से इतना क्यों गड़बड़ हुआ? नंबर वन, यूएस ने पॉलिसी स्टांस बहुत अचानक से चेंज किया. इट जस्ट चेंज्ड ओवरनाइट. यूएस ने बहुत जल्दी ही स्टांस चेंज कर लिया, वेयर दे सेड दैट वी विल कीप इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड विल पुल बैक लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट, राइट? उसकी वजह से इतनी जल्दी जाने लगा, अनप्रेडिक्टेबल मूव वन. नंबर टू, ऑयल का रेट बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ गया, राइट? इंडिया इज अ मेजर इंपोर्टर ऑफ ऑयल, सो इंडिया इंपोर्ट्स 85% ऑफ आर ऑयल, राइट? तो इसकी वजह से मैं दिखाता हूँ दो चार्ट्स, आपको और इजीली समझ में आएगा कि कैसे रुपी का जो ट्रेंड है, राइट? इफ यू सी हियर, यू विल सी कि देखो रुपी जो गया यहाँ पे स्पेशली नोटिस करना, राइट? जैन फेब मार्च में थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा ठीक हुआ, and then again it just raised like a racehorse, right, to 76 77 से 80 तक, right? Now just look at how, डाउनवर्ड होना चाहिए कि रुपी गिर रहा है, बट yeah, this is how we make the curve, right? Now look at oil का price in USD. ग्राफ इज काफी सिमिलर. Exactly. So where you see this spike Jan to March April, right, इधर भी you will see that, and where you see this fall you will see it यहाँ पर भी, ये जो फॉल दिख रहा है ना आपको थोड़ा सा यहाँ पर भी, एंड ये वापस जो राइज आया ये राइज है, गॉट इट. करेक्ट.
And if you look at the July rates and all of that, 2020 के rates, April, May, June 2020 के rates, those are like $44, right? And now it's $116, $117, right? So oil का prices बहुत ज़्यादा बढ़ा, which was one of the factors that contributed to the fall of rupee. कैसे? So we are importers of oil. Got it. Right? हम जब ऑयल खरीदने जाते हैं, हम यूएसडी से खरीदने जाते हैं. गॉट इट. पहले जो चीज मैं $50 में खरीद रहा था, अब मैं वो $100 में खरीद रहा हूँ. तो पहले आपसे मैं मान लो डॉलर को भूल जाते हैं, राइट? आप मुझे आपके स्पेक्स दोगे अगर मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा. ठीक है. अब आप बोलते हो कि यार अब आप परेशान हो गए, आप बोले यार रोज रोज मेरे से चश्मा ले लेता है ये मेरा, मुझे 2 चॉकलेट देना. ठीक है, तो मेरे लिए तो महंगा पड़ रहा है ना. हाँ. है ना. प्रेशर आ रहा है मुझ पे टू गिव यू 2, बट आई विल हैव टू गेट दोस 2 चॉकलेट्स बाय गिविंग समथिंग. हाँ. राइट. सो आई हैव टू गिव यू राइट नाउ $100. नाउ लेट्स कम टू द ऑयल का थिंग. आई हैव टू गिव यू $50 की जगह $100. सो आई हैव टू बाई डॉलर्स फ्रॉम समवेयर. ये तो मेरा करेंसी तो है नहीं कि मैं छाप के दे दिया. अगर मैं डायरेक्टली आपसे रुपी में ट्रेड कर रहा होता, विच विल कम टू लेटर, तो मैं बोलता कि यार ये तो उतना ही वैल्यू है ना. करेक्ट. बट यहाँ पे तो मैं मुझसे आप $2 मांग रहे हो, तो मैं $2 खरीदूंगा मतलब डिमांड बढ़ गया मतलब प्राइस वापस ऊपर गया और रुपी का प्राइस डिप्रिशिएट कर रहा है. ये क्लियर है एकदम कॉन्टेक्स्ट. क्लियर है. परफेक्ट. एफआईआई आउटफ्लोज भी देख लेते हैं. लास्ट 4 महीने में सिर्फ 1,71,000 1,71,000 करोड़ का आउटफ्लो है. वी हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ एन आउटफ्लो, राइट? 2008 में भी थोड़ा बहुत हुआ था और भी पहले भी हुआ है, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर टाइम्स व्हेन वी आर सीइंग दिस ह्यूमंगस आउटफ्लो. And it's continuing. I think every month only we see a headline के record high FII outflows. Exactly. Now let's come to, ये आपको कॉन्टेक्स्ट तो समझ में आ गया कि अच्छा रुपी फॉल कर रहा है, क्यों फॉल कर रहा है, इसका बेस इकोनॉमिक्स क्या है, मेंटल मॉडल क्या है. गाइस, आवर objective here is to give you mental models also, so that tomorrow when you're looking at these headlines you can directly connect, right? You don't have to fall back on another video to think यार ये कैसे वर्क करता है. You'll be able to think about the cause and effect also, right? So that is our objective with this video as well, कि हम आपको वो मेंटल मॉडल्स दें जिससे आप बाद में भी समझ पाओ. Now let's come to the impact of this fall of rupee on imports and exports. So guys, India is majorly an importing country. हमारा net imports होता है. We are not net exporters, right? So that creates a burden on us whenever we have a depreciating currency. When I say depreciating currency, आसान भाषा में मुझे ज्यादा रुपए देके अगर डॉलर खरीदना पड़ रहा है तो मेरे लिए नुकसान की डील है, क्योंकि मैं ज्यादा पेमेंट्स डॉलर में करता हूँ rather than getting money in dollar, right? For a country जिस मुझे अगर मिलना होता, right, पैसा अगर मुझे डॉलर्स मिल रहे होते कहीं से, अगर मैं नेट एक्सपोर्टर होता, it is very good for me. So let's now look at the impact on imports, and we'll use screenshots and all of this from whatever we've collated from different sources to just give a view of what's happening, right? So first of all, इंडिया का ना इम्पोर्ट ही जून में $66 बिलियन है. ये बढ़ के आई थिंक कुछ $80 बिलियन है right now, the current number. This was the older number, which was only the commerce and industry का number, service वगैरह का नहीं था इसमें. But that has increased tremendously, and this is the amount that we are importing every month, right? So we have a very high import bill already. Imports have increased by 55%. There was this article, I think, Economic Times वगैरह में, month on month, and our exports have only increased 25%. Out of this, approximately $10-12 billion is oil only. Okay. Got it. So if my oil bills are doubling, right, that is a major chunk of my import bill doubling, right? So that is what's creating a problem for us, to be honest. So ये import पे impact क्या आ रहा है ना? I'll just show you with a simple example. If I had to pay $1,000 to somebody, I was a corporate and I had to pay $1,000 from somebody, and say I was borrowing money from a bank to make this payment, I would have borrowed $75,000 and I would have paid this, right? Now I have to borrow $80,000 to make the same payment. Got it. So that's creating a big problem for me. Getting it? Now export side पे आते हैं तो फायदे हैं, ठीक है? हाँ. अच्छा, इंपोर्ट्स अपन और क्या क्या करते हैं? अपन गोल्ड, कोल, कोक, ब्रिकेट्स, ये सब इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट? Even edible oil.
edible oil also, silver also. Silver ka to imports rose by 65 times. I don't know what people are using the silver for. Right, but it's increasing crazily. And I think even if you look at gold also, I think wo hedge against inflation wala concept, right? I think People that's are a buying more of thing. gold. Yeah, so our gold imports are also increasing, right? So now let's come to the impact on exports, right? Hmm. Exporters are very happy right now Hmm. that they'll get more money on their exports, right? So if they were billing somebody for $1,000, right, they would have gotten 75,000 equivalent when they converted into INR. Now they're straight away getting 80,000. What are the companies that are benefiting from exports wala angle? TCS, Infosys, whoever is a major exporter in the country Hmm. is benefiting from it. Who's getting hurt by this import wala thing? Oil जो भी use कर रहा है वो hurt हो ही रहा है, right? We're importing oil, it's getting costlier, it's hurting us, right? एंड ऑयल हर किसी चीज के ट्रांसपोर्टेशन में तो यूज होता ही है, तो Correct. So एवरीथिंग इज logistics businesses are just crying. हम्म Everywhere logistics business is crashing. And I was listening to something very interesting thing that for India, why alternative energy and why electric vehicle makes sense, हाँ and why Ola and Uber will go out of the market. They will not even survive if they stay on the same model. Will be their economics on energy spends. हम्म It will not be any behavior shift, change, blah blah blah. हम्म वो इकोनॉमिक से नहीं सूट करेगा ऑयल वाला, right? So that will be a major thing in the coming days. Sorry for digressing, but yeah, coming back. Now let's talk about the measures that RBI is taking, right? क्योंकि RBI को आना पड़ेगा अगर ये चलता रहा and free market रहा, and if somebody is not intervening and if market forces are left to be, we would see 85-90 rupees also per dollar, right? And that will be a crazy outcome for us. We will just go bankrupt in probably very quickly, to be honest, right? या So, what are the measures that the RBI is taking? We'll start diving deeper into that, and I want your inputs also. I know you've written a couple of pieces on this, so we'll add those links here, या and let's take your inputs also because मैं थक भी गया हूँ बोलते बोलते. So, the measures that are taken by RBI, number one, guys, is that RBI has set up a system to settle trade in rupees. Now, गरिमा, आप बताओ मुझको कि ट्रेड रुपी में क्यों सेटल करें और डॉलर में क्यों कर रहे थे? तो डॉलर में तो हम इसलिए करते हैं, लाइक यू सेड ऑयल पेग होता है डॉलर में, तो हमें अगर हम ऑयल खरीदते हैं हमें डॉलर में ही पेमेंट करनी पड़ती है. प्लस अ लॉट ऑफ अदर करेंसीज आल्सो आर पेग टू द डॉलर, इसलिए हम हमेशा बोलते रहते हैं कि अगेंस्ट द डॉलर हमारा रूपी कितना गिरता है, राइट? सो सारी ये करेंसीज है ना वो लिंक्ड है डॉलर से, तो डॉलर में अगर हम किसी भी कंट्री से डील कर रहे हैं तो इट्स इजियर टू मेक दोज पेमेंट, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, राइट? तो इसलिए हम डॉलर में यूज करते हैं. बट इसकी वजह से, बिकॉज वी आर नेट इम्पोर्टर्स, इसकी वजह से मार्केट में डॉलर का डिमांड और ही बढ़ता जा रहा है, राइट? तो अगर हम रुपी में सेटल करें तो डॉलर का डिमांड ही नहीं है. अगर मैं कुछ खरीद रही हूँ और मैं उसको रुपी में ही खरीद सकती हूँ, तो मेरे को जितना रुपी चाहिए इतना आई कैन प्रिंट, दो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट बिकॉज इन्फ्लेशन और बढ़ेगा. बट वी हैव दैट रुपी रिजर्व, ज्यादा रिजर्व है हमारे पास, इसलिए डॉलर का डिमांड नहीं खत्म हो जाएगा ना वहाँ पे. हम ऑयल अगर सीधा ही खरीद रहे हैं रुपी में Correct. तो डॉलर का डिमांड खत्म हो जाएगा. तो Correct. डॉलर का डिमांड खत्म होगा तो लाइक यू सेड वो अप्रिशिएट होना बंद हो जाएगा, हम डिप्रिशिएट होना बंद हो जाएंगे. Absolutely. So, guys, again, a mental model here. Try and always think in terms of what's increasing the demand or what's reducing the supply, or what's increasing the supply and what's reducing the demand. Whenever you think of anything in terms of demand and supply, especially when it comes to market forces and when it comes to all of these different exchange rate related stuff, interest, inflation related stuff, it's much better to think of demand and supply, right? So, as Garima rightly said, demand for dollar would go down if we started settling in rupee, settling trades in rupee. That's number one. Number two, it becomes a fixed rate exchange, right? When I make an invoice in rupees, where I say that I will pay you 75,000 rupees, मेरा कोई डॉलर वॉलर का रिस्क ही नहीं है कि डॉलर का भाव जो भी जा रहा है नहीं जा रहा है, मुझे 75,000 देने, right? That brings in predictability and that removes currency risk, right? So that's why RBI is after countries to settle payments in rupees, right? Why do countries not already do it in rupees? Is because of trust. More people trust dollars, more people trust euros, right? Very few people trust rupees. एंड रुपी का हिस्ट्री उतना अच्छा रहा भी नहीं. 1960s में बहुत गंदी हालत हुई थी हमारी, राइट? So, because of that, rupee was not that appreciated in the global markets. Yuan का भी dominance है थोड़ा सा, but India का नहीं रहा है. We've been fighting our own battles in house inside our own country over the last so many years, and we've always looked inward, not
did not have a very outward looking policies. But now that's changing, right? And now we are pushing that कि नहीं आप rupee में trade settle करो, and a lot of countries are happy to do that also. But very well explained. Let's move on to the next one, where again you can explain this one much better, I think, where RBI is spending over $41 billion from its reserve defending rupee since February 22. And एक और अभी न्यूज आया ना, क्या न्यूज आया? It's happy to spend 100 billion more to defend the rupee, which is an insane amount. It's one-fifth of our foreign reserves right now. Wow. So थोड़ा सा इसमें भी insight दो. What are these? I think these are open market operations, right? Yeah, these are open market operations. तो थोड़ा सा insight दो आप. ये थोड़ा सा क्रेजी है कि हम डॉलर ना बढ़े और हमारा डॉलर का वो ना खत्म हो, उसके लिए हम और डॉलर मार्केट में बेच रहे हैं, राइट? तो हम क्यों बेच रहे हैं डॉलर्स? अगेन सेम थिंग, अगर डॉलर मार्केट में ज्यादा होंगे तो डॉलर का डिमांड कम होगा, सप्लाई ज्यादा होगा, तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, डिमांड तो उतना ही रहेगा, सप्लाई हमने बढ़ा दिया डॉलर का. या सप्लाई बढ़ा दिया, हमने बेच दिया डॉलर, हमारे पास जो रिजर्व थे डॉलर हमने मार्केट में बेच दिए, तो सप्लाई इंक्रीज हो गया. Correct. And demand match हो गया. Absolutely. And this is why, guys, it's very important to hold dollar in reserve. So whenever things are going good with countries, and especially China is a prime example of that, that it hoarded dollars when it was in that manufacturing spree phase where it became the manufacturer of the world. It hoarded dollars. And now US became afraid that what will happen if China releases that dollar in the market एक साथ. वो अगर कचरे के भाव पे डॉलर बेचने लग गया तो what will happen? And this had happened with rupee in UK. So whatever rupee reserves that UK had, they just released it in the market. ये ले लो भाई ऐसे ही, right? So rupee crashed. 1960s का जो मैं बोल रहा हूँ problem, right? So similarly now, that's why it's important for us to hold dollar reserves so that whenever these things happen, we can release. So I'm very happy that RBI has taken that bold stance कि मैं ready हूँ मार्केट में लिक्विडिटी पंप करने को. वो क्या किया है, मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर दिया है. तो जो लोग स्पेकुलेट करते हैं, एंड अ लॉट ऑफ दिस प्राइस इज ड्रिवन बाय स्पेकुलेशन आल्सो, राइट? सो जो भी स्पेकुलेट करते हैं, नाउ दे आर स्पेकुलेटिंग पॉजिटिवली, एटलीस्ट पॉजिटिवली फॉर अस, right? So that has stabilized it. So now I think, what is the rate? I don't remember. 79.6. From 8 we touched 80, but now we're down to 79.89, which is 79.89, right? Might not seem like huge a difference, but it means a lot. It means a lot, yeah. It means a lot. Every cent counts. Correct. Let's come to the third measure that the RBI has taken, that it has increased import duty on gold. So guys, we read about gold and all of this, right? That we are importing so much gold. तो उनका भी डिमांड कम कर दो ना, तो ऑटोमेटिकली डॉलर का डिमांड कम हो जाएगा. करेक्ट. सो उसी की वजह से लोगों ने गोल्ड के प्राइसेस, हमारे गवर्नमेंट ने बोला कि गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज करो, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो. सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Yeah, these are some measures, miscellaneous measures that the RBI has taken to ensure that we have either sufficient demand, sufficient supply of dollars, or we reduce the demand for dollars. So Garima, if you can quickly walk us through these checkpoints. Yeah. So the one major way we can get dollars is through export, right? But right now we don't have enough resources to increase that, at least immediately तो नहीं. तो और कैसे आ सकते हैं डॉलर्स कंट्री में? थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, राइट? अगर एनआरआई या कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास डॉलर्स आएंगे. तो द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई इज मेकिंग इट बेटर फॉर देम टू इन्वेस्ट. उनको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि इन्वेस्ट बेटर. तो the first exemption from cash reserve ratio and statutory liquidity ratio, that is just an internal thing. That will not boost inflows. तो उसमें क्या है ना, हम दिस इज एप्लीकेबल फॉर इवन आवर मनी, राइट? तो जब भी एनआरआईज या फॉरेन एंटिटीज मनी डालते हैं बैंक में, तो बैंक्स नीड टू कीप सम मनी एज रिजर्व रेशियो, राइट? तो कैश में भी और गोल्ड एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स में भी उनको रिजर्व में रखना पड़ता है, जस्ट फॉर सेफ्टी, राइट? तो उस रेशियो को हमने कम कर दिया. उससे क्या होगा, जो मनी सपोज पहले 10,000 में से 1,000 रिजर्व में था, अब 5 से 500, तो 9,500 एक्स्ट्रा आ गया मार्केट में. वो डॉलर जो बैंक 500 एक्स्ट्रा डॉलर्स मार्केट में आ गए. एग्जैक्टली. वो डिप्लॉय कर सकते हैं, एंड उससे क्या होगा, हमारा डॉलर का रिजर्व और बढ़ेगा आरबीआई के पास या फिर दूसरे बैंक के पास, और डॉलर आएंगे रिजर्व में. मार्केट में डॉलर ज्यादा है, आरबीआई से कोई लेना देना नहीं है इसका. हाँ, मार्केट में और डॉलर्स आएंगे, राइट? तो वही डॉलर का डिमांड, सप्लाई बढ़ जाएगा. गॉट इट. What about external commercial borrowings? Yeah, so external commercial borrowings, as the name suggests, बाहर से जो हमारी कंपनीज बोरो कर सकते हैं, that is what is external commercial borrowings.
corporates that borrow money from other entities, foreign entities. तो इस पे आरबीआई ने एक लिमिट लगा के रखा है, गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगा के रखा था $750 million. ठीक है, Okay. बट इसको हमने इंक्रीज करके अभी 1.5 बिलियन कर दिया है, Okay. मेक श्योर कि और डॉलर्स बाहर से आ जाए. Got it. So this will Straight increase forward. the supply of dollars again in the market. Yeah. Understood. Then they have increased the interest rates, I think, on NRI deposits, NRE deposits. So So foreigners जो deposit basically, यहाँ पे कर रहे थे इंडिया. in deposits का interest rate had to be equal to the interest rate we were getting on the rupee. But अब आरबीआई ने बोला है कि भूल जाओ इस रूल को. If increasing the interest rate is getting you more dollars, बढ़ा till October 31st, not forever, till October 31st. Nice. So a temporary measure that they're taking. Yeah. Understood. And what is this FPI investment in debt? So basically, we had a lot of restrictions on FPI investment. वो सिर्फ certain government bonds पे 5 year, 10 year, 30 year में ही invest कर सकते थे. But अब हमने उनको 7 year bonds पे and 14 year bonds पे भी invest करना allow कर दिया. So basically, ज़्यादा options दे दिए हैं तो ज़्यादा money आएगा, ज़्यादा dollars आएंगे basically. Understood. Got it. Superb, yeah. So I think we've covered everything from why this started happening to how it impacts our import bill, how it impacts our exports, and also the measures that the RBI has taken. Now let's dive deeper into, and I think you've recommended some very interesting moves that the RBI or the government can take to further improve the situation. So why don't you take us through all of these 4 points? तो जैसे हमने गोल्ड पे इम्पोर्ट ड्यूटी डाला जस्ट उसका कर्व करने के लिए, तो और भी नॉन एसेंशियल आइटम्स है जिससे हम शायद लग्जरी आइटम्स हो गए या कॉस्मेटिक्स एंड ऑल ऑफ दैट, उस पे भी हम इम्पोर्ट ड्यूटी डाल सकते हैं तो ताकि उनका डिमांड कम हो एंड डॉलर हम और स्पेंड ना करें मार्केट में, जो हमारे पास लिटिल डॉलर्स बचे हैं, राइट. एंड एक्सपोर्टर्स को भी मैंडेट कर सकते हैं, एक लिमिट डाल सकते हैं, थ्रेशोल्ड डाल सकते हैं कि योर बिल्स जो तुम्हारे यूएस से या दूसरे कंट्री से जो भी बिल्स आ रहे हैं जो डॉलर्स में आने वाले हैं उनको आप और फटाफट लाओ ताकि हमारे पास और फटाफट डॉलर. वेरी गुड. या ऑल्सो हम भी जो इन्वेस्ट करें बाहर, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो ओवरसीज इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे भी हम लिमिट्स लगा सकते हैं ताकि अगेन a lot of dollars that we already have don't go out. So that we attract dollars, but we don't invest again in dollars. We just keep attracting dollars here and we reduce it. So I think यार फिर तो लोगों को, जो लोग अभी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, that hey, I'll invest in the US markets and all of that. I think we should appeal to them also that for now, guys, we are at a situation where we need dollars right in our hands. So let's not increase the demand for them in whatever little way that we can for some time. There are more than good opportunities, enough opportunities in India also of making money, creating wealth. And I think there's no dearth of good ideas to back here. And we should put that money, that rupee, in India itself for now at least, till the situation actually, becomes much, much more manageable, for the lack of a better word. Vocal for local here also. Vocal for local, guys. Don't invest in US, invest in India, in Indian rupee. Yeah. And you've said introduce high interest bonds for NRIs also. Yeah. So this is something I think that, this is something that we had already done. I think in 2000s, SBI had introduced India Millennium Bonds for NRIs, which interest rate was 8.5% on these bonds. For dollar, I think euro and the pound had a different interest rate. So this immediately got us more investment. Great, yeah. I think this is a good wrap. This is a good holistic discussion on what more can be done. I hope somebody from the government and the RBI sees this and you can share it with more people, guys, so that this reaches more people and it reaches them also, hopefully, and they can take some more measures. Most probably they'll be taking a lot of different measures also, which will keep coming in the news. I hope we've been ahead of the curve in terms of giving more ideas on how to solve this problem rather than just talking about the problem and what the RBI is doing and being reactive. We want to be proactive and we want to show you that hey, it's not that difficult. Some of these ideas you can come up with also. And I would love for you to comment in the comment section if you have any ideas and very interesting ideas also to either reduce the demand for dollars or increase the supply for dollars. One thing that I'm thinking of right away is that let's not buy a Netflix subscription if Netflix is sending money back to its parent entity in the US, which is a derivative kind of, not putting money, not increasing the demand for dollars.
But yeah, you can have very interesting ideas, and I would love to hear them in the comments. And do subscribe to the channel, guys. That was the last slide and the most important slide. And do share this with your friends. Thank you, Garima. Your journey has been super inspiring for me, where you're explaining economics concept simply to an audience when you have not had any economics background. So love it. Great journey. And thanks, guys. Thanks for listening.